This is a next buy we are doing for the Pakistan market, and this is coming from a Sandy and Greg Pearson farm. How big the herd is, what's really happening, what's some background if you can give us here for your dairy farm. Yeah, we've been farming for around 20 years in this area on the same farm. Okay. This land where these cattle are is adjustment land. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फार्मर्स। रिवरजन की सिलेक्शन स्टार्ट है। हम टैगिंग करने के लिए सैंडी एंड ग्रेग पीयर्सन के फार्म के ऊपर आए हुए हैं। हमारी प्री सिलेक्शन स्टार्ट है, इधर हम टैगिंग करने लगे हुए हैं। इसमें से हमारा जो प्री रेक्विजिट था वो यही था कि हमें 300+ kg की हैफर्स चाहिए। पॉल विल्सन हमारे साथ हैं, सैंडी जो फार्म के ओनर हैं वो भी इधर मौजूद है, हमारे साथ हेल्प कर रही हैं टैगिंग में। हम वो सारी कैटल उठा रहे हैं जिसका वेट वो 320-330 kg प्लस हो, और उसके बाद हम इसको अपनी एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर लेकर जाएंगे फॉर एआई प्रोग्राम। इसमें से कुछ कैटल जो है वो रिजेक्ट भी हुई है, दे आर नॉट अप टू दैट मार्क्स जैसी हमें चाहिए फॉर द पाकिस्तानी फार्मर्स। तो पॉल इस वक्त हमें असिस्ट कर रहे हैं टू सेलेक्ट द कैटल, और इनसे पूछते हैं कि व्हाट आर द प्री रेक्विजिट्स जो हमने इनको बताए हुए फॉर आवर सिलेक्शन। सो पॉल, जस्ट फॉर द फार्मर्स अ लिटिल बिट अबाउट while you are selecting the heifers for us and tagging, the criteria we have given you, I know it's a little bit hard and tough for you, so we have rejected a bit out of it on the cattle. So how is it going? You've just taken, obviously in any mob of cattle there's a bit of a tail in there, but obviously you've just picked out the better end of them. Yeah. All these they're impeccably bred. The production and the figures speak for themselves. Like obviously they're top end cattle, and you've just sort of taken the top 50 out of 150. So you've got a fair decent pick out of them. रिवरजन की कैटल शिपमेंट के लिए एनिमल हमारी प्रोक्योरमेंट स्टार्ट है। हम सैंडी एंड ग्रेग पियर्सन के फार्म के ऊपर हम आए थे कुछ वीक्स पहले। हम इनकी कैटल जो है वो प्री सेलेक्ट करके गए थे। उस वक्त हमने इनको जो क्राइटेरिया दिया था वो यही बताया था कि वी रियली नीड अ रियली गुड जेनेटिक कैटल। ऑफ कोर्स पहले तो हमने वो वाले फार्म शॉर्ट लिस्ट किए हुए थे कि जिन पर रियली एआई ब्रीडिंग से प्रोग्राम्स रन होते हैं, और जिनके पास प्रॉपर ट्रैक हो, कैटल प्रॉपरली रजिस्टर्ड हो और जीनोमिकली टेस्टेड हो। तो उस क्राइटेरिया में सैंडी एंड पियर्सन्स का फार्म जो है वो फॉल करता था। टैगिंग करने के लिए हमने जो अपना सेलेक्टर हमारे पास साथ पैरेलल में काम कर रहे थे, पॉल विल्सन, वो भी हमें असिस्ट कर रहे थे सिलेक्शन में। तो सारी ये जो कैटल सेलेक्ट करने का ये जो हमने प्रोटोकॉल सेट किया हुआ है सिलेक्शन का, वो इसीलिए किया है कि अपने फार्मर्स को बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैटल जो हम शिपमेंट इंशाल्लाह लेकर आ रहे हैं नवंबर 2025 में, वो सप्लाई की जा सके या दी जा सके। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर अलाउइंग अस टू पिक अप the heifers we would like from the mob of 100 heifers. So we have selected today around about 55, so 45 have been rejected, though the rejected cattle is also really good. But of course, for the criteria which we have set for the farmers in Pakistan, that's really up to that mark and up to that standard where we have to really filter out the best out of the best. So first of all, thank you very much for that. I know all of the cattle is really beautiful. We really like the heifers. It's really good heifers. The rejected one, they are also really good. Like if I'm taking for my own personal farm, I would have taken all of them. But I understand. yeah, Yes. but for the farmers, I'm just choosing the best I can supply them in Pakistan. So first of all, thank you very much for that. You're welcome. Thank you for coming and buying Yeah. some of our cattle. So We're pleased to sell them to you. yeah. We know they're going to a good home. So farmers, सैंडी और ग्रेग ये पिछले 20 साल से ये कह रहे हैं कि फार्मिंग के कर रहे हैं, और इनका जो कैटल को जो ये ब्रीडिंग प्रोग्राम्स अपने फार्म के ऊपर रन करते हैं, इनके खुद अपने सिलेक्शन या प्री रेक्विजिट्स जो हैं, दे स्टैंडर्ड्स आर रियली अप हाई। ये कह रहे हैं कि हम मेनली बुल्स जो यूज़ करते हैं टू ब्रीड द कैटल इज़ A2 मेनली, बिकॉज इनकी जो मेन सप्लाई है जो मिल्क की, वो इधर एक बहुत बड़ी चेन है कोल सुपरमार्केट, उधर जाती है, तो उनका स्टैंडर्ड चूँकि बहुत हाई है मिल्क सेलेक्ट करने का,
सो दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट कि जो मिल्क क्वालिटी ऑफ दिस हैफर्स है, मिल्क तो सारी ही होल्स्टेन प्रोड्यूस करती हैं, बट द क्वालिटी मिल्क लाइक दे रियली फोकस ऑन दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रोडक्शन दे आर गेटिंग, के प्रोडक्शन जो है वो रियली आप हाई क्वालिटी हो. So it's purely a grass-fed operation. On a pasture base, Yeah, where we do some substitutional feeding in the dairy with a grain mix. We don't irrigate, so we rely on the weather to grow grass basically. So, and this area has quite suitable weather conditions to grow enough grass for us to predominantly feed our herd off a pasture-based system. So how much how is your cattle yield? I mean, like how far they are lactating when they are in a production cycle? Yeah, so with 340 cattle, we produce about 2.9 million litres per year. Per year. And there's roughly 215,000 kilos of solids. It equates to roughly a 4.1% fat component and a 3.5% protein component. And what's the literage of one cattle a year? It's around 8,500 litres per cow. So फार्मर्स जितनी हमने अभी तक इनसे सिलेक्शन की है, जो हमने टैगिंग की है अपनी यंग हैफर्स की, जो राउंड अबाउट 300 kg के राउंड अबाउट उनका वेट था ऑन एवरेज लाइक 320 330, तो उससे कुछ एक बिट इनके पास एक ऐसा हर्ड खड़ा था जो उससे बिट ओल्डर है, सेम ईयर बर्थ है, बट दिस इज़ अराउंड अबाउट 350 360 kg एट द मोमेंट अराउंड अबाउट देयर. तो इनका आज एआई प्रोग्राम इधर अपने फार्म के ऊपर रन हो रहा था, तो हमने सोचा कि आपको वो वाली हैफर्स दिखा दें जो कि हमने सेलेक्ट किए हैं. सो लेटर ऑन वो इस पोजीशन में आ जाएंगी जब हम उनको ऑफ कोर्स कंसनट्रेटेड फीड थोड़ी सी देंगे, उनको बाली है के ऊपर फीड करेंगे फॉर नेक्स्ट 30 days सो दे कैन गेट देयर वेन. सो उसके बाद हम भी अपना एआई प्रोग्राम रन करेंगे. सो एट द मोमेंट सैंडी जो है वो अपने फार्म के ऊपर इनके एआई टेक्नीशियंस आए हुए हैं, वो आज इनको इंसेमिनेट करेंगे. ये खुद उसको ये इनके अपने फार्म के लिए है स्पेसिफिकली, बट जो हैफर्स हमने सेलेक्ट की हैं वो ऑफ कोर्स बेटर जेनेटिक है देन दीज हैफर्स. Yeah, I was asking Sandy this before. So Sandy, the cattle which we have selected today, the young heifers, so you reckon they are a bit more better genetic than these one, existing ones you're having here, is that right? Yes, and I say that just because the bull, Alice, I've spoken about quite a bit. He's predominantly the bull that is the sire of the heifers that you're taking, and he has very good qualities. He was only available in sexed semen and his availability was limited, and we weren't able to get him for this joining of these earlier ones. He was only available for those heifers that you have selected, so which are in the later calving mob. With our milk supply requirements, we need to have a certain number of cows calve in the early part of the year to supply milk in that early part of the year. So that's why we were restricted with the cattle that we had to keep, purely based on our milk supply requirements. सो फार्मर्स ये वाली हैफर्स ये ऑफ कोर्स अपने लिए रख रहे हैं क्योंकि इनके अपनी मिल्क सप्लाई रिक्वायरमेंट्स हैं जो इन्होंने फुलफ़िल करनी होती हैं. जैसे हम पहले आपको बता रहे थे कोल्स को ये सप्लाई करते हैं. हमने आपको वो सारा बैकग्राउंड बताना है हैफर्स का कि ये आई किधर से हैं, हाउ दे बॉर्न, वेयर दे बॉर्न, कौन से फार्म से हम पिक कर रहे हैं. हम ऐसे ब्लंटली जाके ऐसे अग्रेसिवली परचेज़ नहीं कर रहे कि जिधर हमें जो है वो चीपर कैटल मिल रही है हम उधर से उठा लें. इट्स नॉट वर्किंग लाइक दैट. हम ट्राई कर रहे हैं कि आपको द टॉप क्वालिटी heifers pregnant with sex semen AI by our own staff वो हम आपको डिलीवर करें. सो दैट इज़ द मोटो. सो ये कैटल जितनी आप पीछे देख रहे हैं, सो दिस इज़ हाउ इट्स गोना बी लाइक. जो हमने सेलेक्ट की है वो ऑफ कोर्स इंशाल्लाह आफ्टर अबाउट 30 days इससे बेटर कंडीशन में होगी. ये इनमें से कुछ हैफर्स इनके पास ऐसी भी हैं जो 340 kg के राउंड अबाउट हैं या 330 के ऊपर एग्जिस्ट कर रही हैं, और कुछ इनके पास 360 350 के ऊपर हैं. सैंडी, thank you very much for giving us such a long time today. We are really excited about it and we want to thank you. Any particular message you want to give to Pakistani farmers, a short message which you want to say to your Pakistani farmers? I know once they're going to be here to select their heifers, they're definitely going to come here to see your dairy as well, where your cattle is milking. So farmer, हम आपको ये भी बताते चलें कि next time जब हम इधर आएंगे तो इंशाल्लाह आपको इनकी milking का operation भी दिखाएंगे. So Sandy, any particular message for the Pakistani farmers?
I'd just like to say thank you for coming to our farm and selecting us to buy your cattle. We're really pleased to know that they are going to a farm in an area that will look after them very well. And we love our cattle, so we really want to know that they're going to the best farm. So please look after them, and thank you very much for coming to us. Thank you, farmers. Thank you very much.